बयान दे दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का प्रधान कोतवाल जो है वो चोर है। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ा, माफीनामा लिख के दिए थे ना। वो आदत है उनकी, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आज बहुत जाति जनगणना उनको याद आता है। कुछ दिन हम लोग भी INDIA में थे, जब हम लोगों ने मुंबई की मीटिंग में, बंगलोर की मीटिंग में यह प्रस्ताव पेश किया था कि इस पर प्रस्ताव पास करिए, तो क्यों मुंह में उनके टेप लगा हुआ था? क्यों चुप थे वो? किसके दबाव में चुप थे? तो ये अपनी राजनीति करते रहते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तथ्य कुछ तोड़ मड़ोड़ का उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उनको आदत है, ये कहावत है हम लोग के यहाँ, थूक के चाटना। वो थूक के चाटने के आदी को गुमराह करने का काम उन्होंने किया है और हवे में बात करते हैं। मुझे लगता है उनके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ उनके पास इस महाराष्ट्र के इलेक्शंस को लेकर कहाँ पर वोट बढ़ाए गए, कहाँ पर वोट कम कराए गए, ये जो है सभा पटल पर उनको रखना चाहिए। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अगर उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है कि वो प्रूव कर पाए कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में कोई धांधली हुई है, तो वो जो है मुझे लगता है स्पीकर के पास या सभा पटल पर उनको प्रस्तापित करना चाहिए। और अगर नहीं कर पाए तो पूरे देश के सामने फिर से एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए। हर बार जैसे राहुल गांधी जी भाषण करते हैं इस सदन में, उसी तरह का भाषण मुझे लगता है कि आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा बचाए रखने का काम भी उनके हाथ में है। दिन ब दिन वही भाषण, वही भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी जी यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको आने वाले समय में सीखना बहुत ज़रूरी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा को, पद को किस प्रकार से बनाए रखें। तरह तरह के भाषण होते हैं, मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है, इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. And he is making a unverified statement about invitation of the prime minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. The prime minister has denied it, and the army has disagreed with the prime minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. What territory? ऐसा ही सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where Without foreign policy, leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the prime minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. ये ठीक नहीं है सर। LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information. So we would, from any official source, he must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it.
I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the house. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. So we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. Number one. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters and guide them on what a future, on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Now, we talk about defense. And today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it. And the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर. ये सीरियस मामला है. आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन गरम कहानी आप बना के बोल रहे हैं. ये तो बहुत सीरियस मामला है. विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना. आप पानी. अनुरोध है लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे. ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है. आप सदन में से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का बात करते हो, सीमा का बात ऑफिसर बर्तन से अलग बात करते हैं. ऐसा मत बोलिए. ये देश के लिए ठीक नहीं है. आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन. ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution
to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by. Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partner